Hello, this is video number 4 for chapter e-commerce. Now let us start with the next module of ERP, that is enterprise resource planning. The next module is finance and accounting module. Okay. Whole inflow and outflow of money capital is managed by finance module. ठीक है, मतलब money का inflow and outflow, ठीक है, overall जितना भी inflow and outflow of money विद इन द बिजनेस होता है, क्लियर, उसका मैनेजमेंट, ठीक है, कौन करता है? ये पर्टिकुलर मॉड्यूल नोन एज फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी मॉड्यूल. ओके, दिस मॉड्यूल कीप ट्रैक ऑफ ऑल अकाउंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस लाइक एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा. ठीक है, जितने भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू है, दैट इज इनकम, ओके, उन सब का सब ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने का काम फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल ऑफ ईआरपी का काम है. ओके, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज इजी टास्क फॉर दिस मॉड्यूल. ओके, सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ पर्टिकुलर ईयर. ओके, सो वो जो रिपोर्टिंग का काम होता है, क्लियर, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनता है, क्लियर, वो टास्क भी कौन करता है? फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी मॉड्यूल. एनी फाइनेंशियल डेटा that is required for running business is available on one click. ठीक है, आपको कोई भी पर्टिकुलर डेटा का रिक्वायरमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर यू कैन से लाइक इनकम स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट है या बैंक स्टेटमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, या आपने कितना टैक्स पे किया या आपका कितना टैक्स पे करना बाकी है, ठीक है, क्लियर, या कोई भी आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हुए ओवरऑल द ईयर. ठीक है, आपको कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट चाहिए अबाउट योर फाइनेंस और अकाउंटेंसी, ठीक है, फॉर योर बिजनेस, यू कैन गेट इट ऑन वन क्लिक ऑफ योर माउस. ठीक है, सब कुछ आपके सॉफ्टवेयर में, दैट इज ईआरपी में स्टोर होता है. क्लियर, इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी मॉड्यूल, इज वेरी हेल्पफुल फॉर टेकिंग डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, जब भी उनको कोई नया डिसीजन लेना है अबाउट लाइक के नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करना है बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, सो दिस मॉड्यूल हेल्प्स मैनेजमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम by providing all the required information regarding your finance and accountancy. Next is CRM module, also known as Customer Relationship Management module. This module helps a business organization to manage its existing customer. ठीक है, ये मॉड्यूल जो existing customers है उनको business से connected रखता है, ठीक है, और ट्राई करता है कि और भी नए नए customers business के लिए ऐड करता है. CRM department is helping to boost the sales performance through better customer service and establishing a healthy relationship with customers. This means by maintaining healthy relationships with customer, ठीक है, आप अपना sales increase कर सकते हो. आप जितना better service provide करोगे अपने customer को, automatically, gradually आपका slowly and gradually आपका sales will increase. Okay. Next, all the stored details of customers are available in the CRM module. ठीक है, छोटे से बड़ा each and every detail about customer, like name of the customer, even birth date of the customer, ठीक है, and the order, regular order जो क्या करता है customer, ठीक है, हर एक particular detail about customer is stored in CRM module, that is Customer Relationship Management module. Okay. CRM module helps to manage and track detailed information of the customers, like customers के साथ कितनी बार कॉल हुआ, ठीक है, क्या बात हुआ उनके साथ, मीटिंग्स कितनी बार उनके साथ अरेंज हुए, डिटेल्स ऑफ परचेज, कस्टमर ने कितना क्वांटिटी, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कितना यूनिट्स में उसने परचेज किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन, कस्टमर के साथ आपका कितने टाइम तक का ड्यूरेशन था, एक्सेट्रा. ओके. Next is CRM module can be integrated with sales module to improve sales opportunity, because आप customers को कुछ ना कुछ sales करोगे, ठीक है, तो it is better that आप sales module के अंदर सारे के सारे record store करके रखो, ठीक है, about customers. Okay, so this can be an add-on benefit for sales module that की customer relationship management module उसके साथ integrate हो सकता है. Next module of ERP is engineering and production module. As the name suggests, ये मॉड्यूल डील करता है with the production of a particular organization. Okay, so this module consists of functionalities like production planning, मतलब आप कितना प्रोडक्शन करोगे in future, machine scheduling, ठीक है, कौन से पर्टिकुलर मशीन से क्या पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे. ओके, रॉ मटेरियल यूजेज, ठीक है, कि आपके जो रॉ मटेरियल्स आप यूज करो, ठीक है, वो कितने क्वांटिटी में और कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बनाने के लिए उसको यूज करोगे, ठीक है,
बिल ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन, ठीक है, मतलब आप जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, ठीक है, आप उसका बिल्स कैसे बनाओगे. ट्रैक डेली प्रोडक्शन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन फोरकास्टिंग एंड एक्चुअल प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, ठीक है, मतलब आप डेली बेसिस पे कितना प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, क्लियर. प्रोडक्शन आपका कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, क्लियर. प्रोडक्शन फोरकास्टिंग मतलब आप फ्यूचर में कितना बना सकते हो, ठीक है. एंड एक्चुअल प्रोडक्शन रिपोर्टिंग मतलब एक्चुअली आपने कितना प्रोड्यूस किया, अकॉर्डिंग आपने कितना फोरकास्ट किया था, मतलब आपने कितना सोचा था और एक्चुअली आपने कितना प्रोड्यूस किया. ओके. प्रोडक्शन मॉड्यूल इज ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ये सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन मॉड्यूल सबसे ज्यादा यूज वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो कोई ना कोई चीज के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है. नेक्स्ट मॉड्यूल इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल और SCM मॉड्यूल. ओके. रिमेंबर दैट पर्टिकुलर सप्लाई चेन जिसमें स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरर से होता था, फिर होलसेलर, देन एजेंट, देन रिटेलर एंड देन फाइनल कंज्यूमर. ओके. सो ये पर्टिकुलर सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए जो मॉड्यूल होता है दैट इज नोन एज SCM मॉड्यूल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मॉड्यूल. दिस इज द लास्ट मॉड्यूल ऑफ ERP. ओके. SCM module manages the flow of product items from manufacturer to the consumer and from consumer to the manufacturer. Okay, तो मतलब जो भी product flow होता है, ठीक है, from manufacturer to consumer and जो information pass on होता है from consumer to the manufacturer. Okay. SCM involves demand and supply management, मतलब आपका कितना डिमांड हो रहा है आपके प्रोडक्ट का और उसके सामने आप कितना सप्लाई कर पा रहे हो, ठीक है. सेल्स रिटर्न एंड रिप्लेसिंग प्रोसेसेस. सेल्स रिटर्न मतलब आपने कुछ सेल किया और उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ या कस्टमर को अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट और उसने वो रिटर्न कर दिया. ओके. एंड रिप्लेसिंग प्रोसेस, आप प्रोडक्ट को कितना फास्ट रिप्लेस करते हो. शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ट्रैकिंग एक्सेट्रा, मतलब आपके एंड से मतलब फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर कितना फास्ट और कितना क्विकली पर्टिकुलर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है. ओके. सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज बेसिकली अ मैनेजमेंट जो सप्लाई चेन को रेगुलेट करता है. नाउ लेट अस रिवाइज दिस चैप्टर. वी स्टार्टेड विद मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स इज बेसिकली दैट काइंड ऑफ बिजनेस जहां पे आप इंटरनेट के हेल्प से कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर दो, ठीक है. यू कैन आइदर डील इन गुड्स और सर्विसेज. Next, advantages of e-commerce over traditional commerce. First point was global reach और global choice, मतलब business के लिए boundaries extend हो जाती है towards the world, ठीक है. all over the world वो अपना product sell कर सकते हैं. Customers के लिए advantage है कि they can buy the products or goods or services from all over the world, ठीक है. उनके पास wide variety of choices आ जाते हैं. Next point is improved competitiveness with the help of e-commerce and quality of service for customers. So e-business enables suppliers to improve competitiveness by becoming closer to customer, ठीक है. जितना हो सकता है उतना better relations maintain करते हैं with their customers. Okay, और इससे customers भी feel कर सकते हैं कि उनको जो services provide करते हैं normal retailers, उससे better improved services उनको e-commerce websites provide करते हैं. Next point is mass customization or personalized products and services, means products and services according to the wish of the customer. With the help of e-commerce, जितना भी हो सकता है जो भी सेलर है वो अपने कस्टमर्स के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड दे ट्राई टू प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट टू एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस. Next point is shorten or eradicate supply chain, मतलब supply chain that is from manufacturer to the consumer जितना भी short हो सकता है उतना short कर देता है supply chain, ठीक है, with the help of e-commerce. Next point is substantial saving and reduction in cost for both customer as well as seller, ठीक है. कस्टमर को कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत चीप प्राइस पे, ठीक है, और सेलर का जो भी कॉस्ट होता है टुवर्ड्स द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट दे गेट रिड्यूस्ड. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज नोवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, मतलब न्यू प्रोडक्ट्स या इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए ई कॉमर्स इज द बेस्ट अवेलेबल प्लेटफॉर्म. इट प्रोवाइड्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर एंटायरली न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है. हम लोग ने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था लाइक OLX एंड फार्मेसी. Next advantage of e-commerce is convenience to the customers, means customers can do a transaction from anywhere at any time and for any particular thing, okay, and transaction can be done 24 hours a day, 7 days a week and also 365 days a year. Next advantage of e-commerce is paperless society, okay, so e-commerce also helps business to reduce dependency on paperwork, okay. बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग बिजनेस कैन बी इजीली सेंड थ्रू ईमेल.
Next advantage of e-commerce is speed of a transaction and also the speed of the delivery of products that are either goods or services. Next point is lower investment. So it is much easier to start an e-business than in traditional business. Normal retail shop से बहुत ज़्यादा easy होता है to start an e-business because यहाँ पे investment for the business is very low. Next important term is e-tailing. E-tailing is a short form. Okay, the abbreviation of e-tailing is electronic retailing. Okay, so e-tailing is the abbreviation of electronic retailing. It is the sale of goods and services through internet. मतलब normal retail shops में जो goods and services मिलती है वैसे ही अगर कोई internet पे sell करता है तो it is known as e-tailing, electronic retailing. Next important term is e-advertising or electronic advertising. E-advertising is a mechanism of promoting products or services online. It is more cost effective when compared to traditional forms of advertising such as print and TV media. Okay. E-targeting also enables you to target the specific customer. आप particularly target market में भी ये particularly advertisement कर सकते हो. Next is e-marketing or electronic marketing. It is also known as internet marketing, web marketing and digital marketing or online marketing. It is a process of marketing a product or service using internet, emails and wireless media. Some types of e-marketing are video marketing, means video के through आप marketing कर सकते हो, email marketing and blogging, and also social media marketing, मतलब social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. आप उनके through भी marketing कर सकते हो. Next important term is e-security. Okay, e-security means electronic security of all your assets. या आप बोल सकते हो of all your digital assets. Okay, so e-security is the protection of e-commerce assets from unauthorized access. ठीक है, without your permission आपका कोई भी important asset या आपके कोई भी important document कोई भी access ना कर सके. यूज एंड ऑल्टरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, कोई भी उसको यूज ना कर सके, ऑल्टर या चेंज नहीं कर सके एंड डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सके, उसके लिए ई सिक्योरिटी इज वेरी नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स बिजनेस. नेक्स्ट इज ERP, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर. It is a system or software that is used to manage all the resources of the whole enterprise. मतलब एक ऐसा सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो आपको पूरा का पूरा बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करता है. ERP helps to manage business process of various department and functions through centralized application. मतलब कोई एक पर्सन अकेला भी ये सॉफ्टवेयर को मैनेज करके ऑल ओवर द बिजनेस अपना आप बोल सकते हो सुपरविजन कर सकता है. We can make all major decisions by screening information provided by ERP. ERP आपको different graphs and reports provide करता है जिसके हेल्प से आप बिजनेस को मैनेज कर सकते हो. First module of ERP is HR module or human resource module. HR module helps to the HR team, that is human resource team, for efficient management of human resource. Means within an organization कितने different employees काम कर रहे हैं और उनका different records maintain करता है HR module. The second module is inventory module. Inventory module can be used to track the stock of items. मतलब आपके पास कितना stock of raw material या कितना stock of finished products पड़ा है, ठीक है, in your warehouse or in your godowns. The third module is sales module. Okay, तो जितने भी sales के regarding transactions होते हैं या sales के regarding जो भी data होता है that is being managed by sales module. Next module is purchase module. जितना भी purchase के regarding transactions होता है या data होता है, जो भी records होता है जो purchase के regarding necessary होता है, that is being managed by the purchase module of ERP. Next important module is finance and accounting module of ERP. ठीक है, so the whole inflow and outflow of money or capital means मनी या कैश का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ओके, उसको मैनेज करने का काम, ठीक है, उसके जो डेटा रहते हैं उसको मैनेज करने का काम किसका है, तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल. ऑल्सो इट हेल्प्स टू कीप डिफरेंट स्टेटमेंट्स लाइक बैंक स्टेटमेंट या आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया या आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल्सो योर बैलेंस शीट. Next module is CRM module, Customer Relationship Management module. This module helps to maintain better relationships with customer and also helps in increasing sales. Next module is Engineering and Production module. This module is specially of great help for manufacturing industry. Next and last module is Supply Chain Management module, also known as SCM. Okay, this module helps in management or flow of goods between manufacturer to the wholesaler, wholesaler to the retailer, and retailer to the final consumer. Okay, and also flow of information backwards, that is from consumer to the manufacturer.
That's all for chapter e-commerce. Thank you.